कहा जाता है कि लिवर कमज़ोर होना, जैसे बाकी के मांसपेशियां आपके बॉडी के, वही लिवर फ्रेल्टी होता है। So liver frailty, I'll explain you in simple terms. As a concept, frailty means when your muscles, they lose the strength and their function. तो सर हमारे डे टू डे लाइफ में ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है लिवर फ्रेल्टी? हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट वे हेल्थ मीट्स कॉन्वर्सेशन। मैं हूँ डॉक्टर निधा खान और आज हम बात करेंगे लिवर फ्रेल्टी के बारे में। ये क्या है, इस पे क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आज हमने इनवाइट किया है एक वेरी स्पेशल गेस्ट को, जिनका नाम है डॉक्टर अमित मंडोट। डॉक्टर अमित मंडोट इज द डायरेक्टर ऑफ अडल्ट हेपेटोलॉजी एंड लिवर आईसीयू एट ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल। वेलकम टू द शो सर। Thank you, Nidha. सो सर, ये लिवर स्पेशलिटी फील्ड में आपका कितने साल का एक्सपीरियंस रहा है? So I joined gastroenterology and hepatology in 2004. So 21 years of experience now in hepatology and liver दैट्स ग्रेट। diseases. Yeah. सो सर, ये लिवर फ्रेल्टी यानी क्या? So liver frailty, I'll explain you in simple terms. As a concept, frailty means when your muscles, they lose the strength and their function. So this concept actually came in aging. As we age, as we go in, becomes in our 70s, in our 80s, हम देखते हैं कि हमारे मसल्स का फंक्शन और स्ट्रेंथ कम हो जाता है। टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, अगर हम नीचे बैठ जाए तो उठने में दिक्कत होती है बिकॉज हमारे लेग मसल्स वीक हो जाते हैं। तो लिवर की बीमारियां वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें फ्रेल्टी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत जल्दी हो जाता है। So what it means is, because of liver conditions, when your muscles lose their strength and lose their function, that is called as liver frailty. यानी बेसिक कहा जाता है कि लिवर कमज़ोर होना, जैसे बाकी के मांसपेशियां आपके बॉडी के, वही लिवर फ्रेल्टी होता है। So liver के वजह से मसल्स कमज़ोर होने, Okay. मसल्स जो हमारे डे टू डे फंक्शन के लिए हमको हेल्प करते हैं, हमारा चलना, हमारा उठ के बैठना, हम बैलेंस रखना, जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो जब लिवर के डिजीज के वजह से चली जाती है तो उसे हम लिवर फ्रेल्टी कहते हैं। ओके, सो सर, व्हाट इज द काइंड ऑफ पॉपुलेशन हु इज एट रिस्क फॉर दिस लिवर फ्रेल्टी? सो ह्यूज पॉपुलेशन, जिनको लिवर की बीमारी हो, जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज यानी बहुत समय से लिवर जिनका वीक चल रहा है। और एक बात हमको ये जाननी है कि लिवर वीकनेस काफ़ी बार हम डायग्नोज नहीं हो पाता है अर्ली स्टेज में। फॉर एग्जाम्पल, जिनको बहुत सालों से मोटापा है, डायबिटीज़ है, फैटी लिवर है, धीरे 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 उनका लिवर वीक हो रहा है, या जो बहुत समय से अल्कोहल ले रहे हैं उनका भी लिवर वीक हो रहा है। सो एनी पेशेंट विथ अ क्रॉनिक लिवर डिजीज़, जिनका कि बहुत लंबे समय से लिवर वीक चल रहा है, वो सारे पेशेंट्स को लिवर की वजह से बाकी के सपोर्ट ऑर्गन्स भी वीक हो जाते हैं, और उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो वीक होता है वो है मसल्स। सो ये जिनको क्रॉनिक लिवर की बीमारियां है, बहुत लंबे समय से फैटी लिवर है, लिवर जिनका वीक है लेकिन उसके सिम्टम्स नहीं है, वो सारे पेशेंट्स में मसल्स भी वीक होते जाते हैं और वो लिवर फ्रेल्टी का शिकार होते हैं। तो सर, हमारे डे टू डे लाइफ में ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है लिवर फ्रेल्टी? सो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लिवर जो है हमारा एनर्जी पावर हाउस है। बहुत बार हम लोगों से मिलते हैं या पेशेंट्स हम देखते हैं जो कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे मैं बहुत ही टायर्ड फील करता हूँ, मैं बहुत ही थका हुआ महसूस करता हूँ। बहुत बार वो स्ट्रेस के वजह से होता है, बट एक्चुअली मेनी टाइम्स इट इज़ द वीक मसल्स एंड द बोन्स। जब ये हमारे इम्पॉर्टेंट जो दिनचर्या में जो रोज यूज़ होते हैं, कंटिन्यूसली आवर मसल्स आर वर्किंग, वेदर वी आर वॉकिंग, वेदर वी आर सिटिंग, हम जब उठ के बैठते हैं, बैठ के उठते हैं, डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हमारे मसल्स का यूज़ होता है। और जब ये मसल्स वीक होते हैं तो उसका एक फटीग आता है, एंड ऑफ द डे हम फटीग फील करते हैं। अगर लोग कहते हैं कि जो रूटीन एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 स्टेयर्स इजीली चढ़ पाता था, अब 3 स्टेयर्स चलने में थोड़ा सा थकान महसूस होती है, थोड़े मसल्स पेन होते हैं, वीकनेस लगती है, ये सारे फ्रेल्टी के सिम्टम्स होते हैं, बड़े ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। एंड समटाइम्स वी मे जस्ट इग्नोर दिस सिम्टम्स, वी मे फील ओके इट वाज अ हेक्टिक डे, आई हैड अ बैड डे एट वर्क, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड आउट, but actually it may be a sign of muscle weakness, and
in patients who have a liver problem, a liver disease which is going on, either diagnosed or undiagnosed, this muscle weakness can add on to the problem, because liver is an energy powerhouse. When liver is weak, already new energy which is generated in the body is a little less. The metabolism is affected. उसके साथ अगर हमारे मसल्स और बोन्स भी वीक हो रहे हैं, तो हमारी जो डे टू डे एनर्जी होती है, डे टू डे एफर्ट्स की जो ताकत होती है, वो कम हो जाती है, एंड इट अफेक्ट्स आवर डे टू डे क्वालिटी ऑफ लाइफ. And that is why liver frailty is a very important concept which we all need to understand and address it very, very properly. जैसे कि सर कहा जाता है कि एक उम्र हो गई है तो कमज़ोरी आना ही है, बट आई थिंक काफ़ी पॉपुलेशन को ये लिवर फ्रेलिटी के बारे में मालूम ही नहीं है, और दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट बीन डायग्नोस्ड. सो हाउ डू वी डायग्नोज दैट वी हैव गॉट दिस लिवर फ्रेलिटी इशू? So one thing you have to understand is, जो उम्र हो के जो वीकनेस आना जो हम एक्सेप्ट करते हैं, वो एक तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, बिकॉज नाउ विथ सो मेनी मेजर्स यू कैन रियली डिले द एजिंग. कोई भी एजिंग को प्रिवेंट नहीं कर सकता है, लेकिन हम डिले कर सकते हैं एजिंग को. लिवर के वजह से यू आर एजिंग मच फास्टर. इन सिंपल टर्म्स, अगर कोई इंसान 70-80 की तरह बिहेव करे एट द एज ऑफ 40, 50, 60 because of a weak liver, that is liver frailty. Where your aging is much faster, the degeneration of the overall body function is much faster because of a liver condition, that in simple terms is liver frailty. And liver frailty, as I told you, will affect your day-to-day energy. It will affect the way you walk, the balance of walking, because you imagine when your muscles are weak, आप ठीक से balance नहीं कर पाओगे. When you are climbing stairs, when you're doing any strenuous activity, your muscles will feel that impact and you will not be able to do that. Similarly, when your muscles are weak, liver related complications जो होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं. So what all can happen because of liver frailty is, you will have a weak, tired body, an aging body in spite of your actually physical age being lower. Your biological age, you will feel that मैं 40 का होके I feel like a 60-year-old. Plus, you will have liver-related complications which also increase. You have to understand, when your liver is weak, the body has defense mechanisms. So your kidneys, your heart, your muscles, your bones support the liver. But if your muscles and bones cannot support the liver, your risk of infection, the risk of liver-related complications increases. So we have seen that patients who have a particular liver score, say on a score of 0 to 10, because of your liver disease, your score is 5. Because of associated muscle and bone weakness, it will become 7 or 8. So liver के complications जल्दी आते हैं, और कोई भी complications को fight करने की capacity कम हो जाती है. Again, the fantastic example is aging. If you are a 70-year-old or you are a 40-year-old, your ability to fight an infection, fight a complication is different. Similarly, when you have weak muscles and bones, your ability to fight any infection, any complication of liver, जैसे पेट में पानी हो जाना, jaundice हो जाना, ये सारों को indirect way में जो recovery होती है ये complication से, वो कम हो जाती है, weak हो जाती है because of weak muscles. So how do you diagnose this? There are very simple clinical tests. We calculate what is called as a liver frailty index. उसमें 3 या 4 टेस्ट्स होते हैं. एक तो हम एक हैंड ग्रिप देखते हैं, एक स्पेशल मशीन होती है जो हम प्रेस करने बोलते हैं और देखते हैं कि हमारे हैंड ग्रिप का स्ट्रेंथ कितना है. वो कहते हैं ना लोग कि व्हेन यू शेक अ हैंड यू विल नो हाउ स्ट्रॉन्ग अ मैन और अ वुमन इज. सो विद दैट हैंड शेक इज अ फैंटास्टिक वे टू टेस्ट द मसल स्ट्रेंथ. दैट्स वन. सेकेंड इज, you ask someone to just get up from the chair and sit on the chair and do that 5 times and see in how much time you do it. If you take more than 10 to 12 seconds to get up from the chair and sit again 5 times, means your muscles are weak. That is another test. The third one is tandem walking. हम एक पैर आगे रख के ऐसे चलने के लिए कहते हैं. Like a model. Like a model, yes. So if you're tandem walking is weak, you are losing balance, that is a sign that your muscles are weak, and you don't do these in day to day life, so at times हमको पता भी नहीं चलता है.
And the fourth is we look at the overall speed of walk. So we ask them to walk a certain distance and see the speed of walk. So the speed of walk, the balance of walking, the time taken to sit up and to get up from the chair and sit, and the muscle, the hand grip dynamometer. ये 4 टेस्ट जिसको कि 2 मिनट लगते हैं. We can do all these things in 2 to 5 minutes. We do these 4 things and we calculate an index. And based on that, we know whether the patient is or whether the person is robust, which is normal, or pre-frail or frail. Frail यानी बहुत ही weak है, pre-frail यानी weak है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, and robust means patient has good muscle and bone strength. So these are simple tests which we can also do in our day-to-day life and understand whether I'm finding difficulty in doing these things. That's right. So sir, हमारे viewers को जो आपने बताया ये few tests जो हम घर पे भी कर सकते हैं, and when we figure out कि हाँ ये चीज़ हमसे नहीं हो पा रही, we can always reach out to the experts at Gleneagles Hospital. सर Gleneagles Hospital में हमने क्या क्या measures लिए हैं ऐसे liver frailty के बारे में जानकारी देने के लिए और उनको treat करने के लिए? Yeah. So I think one is just to complete the previous thing, how to diagnose. Apart from these tests, once we know that the patient is frail or the person is frail and is having a liver disease, we then also at times do a little more detailed testing. Like many a times we do a CT scan or a DEXA scan for the bones and the muscles. We also do, nowadays there are these bioimpedance analysis. So ये थोड़े specialized test होते हैं. एक बार हमें पता चलता है कि कोई frail है, weak है, तो फिर हम एक्चुअली मसल्स की डेंसिटी कितनी है, मसल्स की वॉल्यूम कितना है, ये हम चेक करते हैं टू फर्दर नो हाउ मच इज द वीकनेस विच इज देयर. वंस वी डायग्नोज दैट द पर्सन इज फ्रेल, द मसल्स आर वीक, द बोन्स आर वीकर, देन वी हैव टू रियली ट्रीट देम प्रॉपरली. Not just, we don't have to treat just the liver condition. Yes, we have to treat the liver condition because liver के वजह से ये सब हो रहा है. क्या होता है ना कि जब लिवर वीक होता है तो बॉडी में एक हमेशा एक इन्फ्लेमेशन रहता है. बॉडी नीड्स मोर एनर्जी टू डू इट्स एक्टिविटीज बिकॉज लिवर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है. सो आप समझिए आपके घर में अगर आपके कमाने वाला मेन पर्सन कमा नहीं पा रहा है तो बाकी लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी और इनकम जनरेट करनी पड़ेगी टू रन द हाउस होल्ड. सो सेम वे मसल्स, बोन्स, ऑल दीज हैव टू, द नर्व्स हैव टू वर्क हार्डर. When they work harder, they become weak. That is one of the main reason. Plus, काफ़ी सारे हार्मोन्स और मेटाबॉलिक एंजाइम्स जो होते हैं वो लिवर में जनरेट होते हैं जो नहीं हो पाते हैं, जिससे भी मसल्स वीक होते हैं. प्लस खास करके हमारे देश में एक अननेसेसरी बहुत ही ट्रेडिशन है कि लिवर की कमजोरी यानी मुझे खाना बंद करना है, मुझे प्रोटीन्स नहीं लेना है, खाना कम करना है. तो लोग अपने आप अपना खाना कम करते हैं, प्रोटीन्स कम करते हैं. ऑलरेडी इंडियन डाइट इज लो इन प्रोटीन्स. सो जब प्रोटीन्स और कम हो जाता है तो मसल्स और वीक होते हैं बिकॉज मसल्स के लिए जो रॉ मटेरियल होता है इज प्रोटीन्स. सो जब हम ये समझे कि ये सब के वजह से मसल्स वीक हो रहे हैं, देन वी कैन ट्रीट इट. सो द फर्स्ट वे टू ट्रीट इज फर्स्ट टारगेटिंग द लिवर. अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल बंद करना है, फैटी लीवर है तो उसका इलाज करना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, लिवर की जो कॉम्प्लिकेशंस है, पेट में पानी हो रहा है, जॉन्डिस है, उसका इलाज करना है. तो जो रूट कॉज है उसको हम टारगेट करते हैं. देन वी हैव टू स्ट्रेंथन द मसल्स एंड द बोन. द फर्स्ट थिंग इज अ थरो न्यूट्रिशनल इवैल्यूएशन एंड न्यूट्रिशन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन इन ट्रीटिंग लिवर डिजीज एंड लिवर फ्रेल्टी इज गुड न्यूट्रिशन. जब हमको रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं मिलेगा तो कोई भी डेवलपमेंट हो नहीं सकता है. जब आपका फाउंडेशन ही वीक हो, तो फाउंडेशन फॉर मसल्स एंड बोन्स एंड फॉर लिवर ऑल्सो इज गुड न्यूट्रिशन. सो हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैलोरी डाइट. यू हैव टू ईट मोर बिकॉज द लिवर व्हेन इट इज वीक द बॉडी नीड्स मोर कैलोरीज, मोर प्रोटीन्स, मोर एनर्जी. कट डाउन ऑन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम करना है, शुगर्स अवॉइड करना है, फ्राइड फूड अवॉइड करना है, अल्कोहल, स्मोकिंग को तो बिल्कुल बंद करना है बिकॉज दे वीकन द लिवर, दे वीकन द मसल्स एंड द बोन्स. सो न्यूट्रिशन हैज़ टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. एंड when patient is having advanced liver disease or lot of weakness of muscles and bones,
you should get in touch with a good qualified nutritionist or a dietitian who will help you out with what are the ways to increase the protein intake. The second is strengthening the muscles and bones, and that can happen only with a very structured exercise program. हम बहुत बार देखते हैं, हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए. एक्सरसाइज के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. कोई कहेगा कि ओके मैं तो 40 मिनट्स वॉक करता हूँ. वो 40 मिनट्स में अगर आप 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर नहीं, 40 मिनट्स में अगर आप 2 या 3 किलोमीटर ही चल पा रहे हैं, उसको हम ब्रिस्क वॉकिंग नहीं बोलते हैं, उसको हम टहलना बोलते हैं. दैट इज अ स्ट्रोल. योर ब्रिस्क वॉकिंग हैज टू इंक्रीज योर हार्ट रेट. So when you do an exercise, that exercise will be beneficial to you only when it increases the heart rate. When we talk of any cardio exercise. So just walking slowly or not walking very fast, not increasing the heart rate will not give you any metabolic benefits. So when we speak, and because nowadays even doctors are at fault because we don't spend that much time with our patients, we don't really understand. वो patients will tell, okay तो मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, रोज हफ्ते में 5 दिन चलता हूँ, but is that walking really fast, really brisk? That is one thing. The other thing is resistance exercises. बहुत बार हम देखते हैं कि patients कहते हैं मैं वॉक करता हूँ. Walking is good. It is good for the heart, it is good for the metabolic benefits. But what your muscles need is strengthening exercises. So हफ्ते में कम से कम 3 बार muscles को strengthen करने की exercise करनी है. और वो हम बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से कर सकते हैं. जिम, आप वज़न उठाइए, कोई अच्छे जिम में आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको हेल्प करे, और धीरे धीरे बढ़ाना है. वो हमको फोबिया नहीं रखना है कि आई एम 50 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड, 40 ईयर ओल्ड, हाउ कैन आई गो टू द जिम? नो, एनीबडी कैन गो टू द जिम एंड यू हैव टू इंक्रीज योर एक्सरसाइजेस स्लोली. सो एक कॉन्सेप्ट है FITT, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी. सो हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है. इंटरवल हर 1-2 दिन में ये एक्सरसाइज करना है. और टाइमिंग एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स मसल्स की एक्सरसाइज करनी है. सो अगर आप जिम नहीं जा सकते तो बहुत सारी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती है. द क्लासिक एग्जाम्पल इज अ सूर्य नमस्कार. आप एक नंबर ऑफ सूर्य नमस्कार कीजिए, दैट विल स्ट्रेंथन योर मसल्स. देर आर मेनी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज विच आर नाउ अवेलेबल ऑन YouTube. यू कैन डू दैट. इवन yoga, when it is done for a very long period, will strengthen your muscles. Yoga takes a little longer to strengthen your muscles, but that will give you the same benefit if you are doing it for a very, very long time in a disciplined manner. So any form where your muscles are being used, they are being stretched, they are being made to work harder, will increase your muscle strength. So aerobic exercise करनी है, जैसे walking, running, cycling, swimming, जिससे कि आपके हार्ट की कैपेसिटी बढ़े, मेटाबॉलिक कैपेसिटी बढ़े, और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है. दोनों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. और तीसरा होता है लुक एट ऑल द डेफिशिएंसीज. बॉडी में खास करके लिवर की बीमारी के कारण और न्यूट्रिशन के कारण विटामिन्स की कमी होती है, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी होती है, आयरन की कमी होती है. तो ये जो विटामिन्स के डेफिशिएंसीज होते हैं वो हमें दूर करने हैं, और उसके लिए सप्लीमेंट्स लेने पड़ सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो. वो हम चेकअप से भी हमें पता चल जाता है. सो ये 3 मेन स्टे होता है ट्रीट करने के लिए लिवर फ्रेल्टी को. और इसके लिए ग्लेनईगल्स हॉस्पिटल में ऑन दिस वर्ल्ड लिवर डे विच इज़ ऑन 19th of April, वी आर लॉन्चिंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लिवर फ्रेल्टी क्लिनिक. What we have realized as a hepatologist, as a liver doctor, I am not an expert in nutrition, I am not an expert in exercise. And my patients rely on me for all their problems. So what we have done now is a liver frailty clinic where we will have a nutritionist, we will have a physiotherapist or an exercise specialist who will guide the patients under my observation or under my guidance. They will give their expert inputs. And what we want is a holistic patient care, where we take care of the patient as a whole, not just the liver or not just a particular organ. And that holistic care can only come when we have different specialties giving their expertise. And that is where this liver frailty clinic, where the patients would be given a proper, so for the first month we would call them every week, then every 2 weeks for the second month, and then every month. And then a lot of it can be done on the phone. So our nutrition experts
and our physiotherapist can be in touch with the patients on phone, use the technology on Zoom and can show them how to do the exercises, what to do, and over 3 months we will see whether it's benefiting them, how much it is benefiting. So we will repeat their liver frailty index, 3 महीने पहले कैसा था, 3 महीने बाद कैसा था, and actually see the benefits. And that holistic care is what we are launching in the form of liver frailty clinic at Gleneagles Hospital, Mumbai. So sir, how do you place this liver frailty clinic in the management of liver diseases? So I think this liver frailty clinic should be at the center of management of any liver patient. Anybody who has a weak liver, even if he is absolutely fit and fine from the day-to-day point of view, उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, उसको बार बार डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वीक लिवर है तो हमें लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए मसल्स और बोन्स और स्ट्रेंथ का ध्यान देना ही पड़ेगा. सो एनी पेशेंट हु हैज़ अ अर्ली लिवर प्रॉब्लम and also all the patients who have advanced liver disease. So this will be the entire spectrum of liver patients who should help their own muscles and bones and strengthen them so that the liver is supported. Those who are in their early stage of liver disease, early cirrhosis, once they have strong muscles and bones, they will fight the complications much better. They will have delayed onset of complications late हो जाएंगे या शायद complications कुछ आए भी नहीं because liver को वो support मिल रहा है. और जिनको ऑलरेडी लिवर की काफ़ी एडवांस बीमारी है, यानी कि लिवर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे पेट में पानी हो रहा है, जॉन्डिस हो रही है, जॉन्डिस हो गया है, पैरों में सूजन आ रही है, लिवर के वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, उनके लिए भी आगे के कॉम्प्लिकेशंस डिले होते हैं. वी ऑल नो दैट लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज़ अ वेरी हाईली डिमांडिंग सर्जरी ऑन द बॉडी. सो वो सर्जरी को सहन करने के लिए, उसको फाइट करने के लिए और उससे अच्छे से बाहर आने के लिए जो बॉडी की कैपेसिटी होती है वो डिटरमिन करती है हमारे मसल्स, हमारी बोन्स, हमारी इम्यूनिटी. तो वो स्ट्रेंथन करने के लिए भी लिवर फ्रेल्टी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. सो लिवर फ्रेल्टी actually is the holistic management. Liver frailty clinic or the liver frailty care is a holistic management of any liver patient who is suffering from a long-standing liver disease. And actually in India we don't have this concept of liver frailty clinic, but in the West, especially US and Europe, they already, lot of these hospitals have a liver frailty clinic where they have a comprehensive multidisciplinary liver care which is offered to the patient. So this is a concept which is new to us, but it is not new in the field of hepatology or in the world. So it's something which we also need to take care of, and we need to give this to our patients who demand and who should always, who deserve a complete holistic care of their own body. So sir, what would be the take-home message for our viewers? I think the take-home message for all the viewers would be, your body deserves the strength and the energy even at the end of a long working day. You should feel strong and energetic even if you have worked very hard. If it is not, that means you need to take extra care of your body. So please take care of your nutrition. Please take care of your exercise routine. Avoid the irritants to the body like smoking, alcohol or a lot of junk food. आपको अगर लिवर की बीमारी है या नहीं है, बट आपके मसल्स, आपके बोन्स, आपके इम्यूनिटी का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, और ये हम हर किसी को रखना है. और स्पेशली अगर आपको लिवर की बीमारी है या लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत सारी बीमारियों से आप जूझ रहे हो, जैसे डायबिटीज़, मोटापा, ब्लड प्रेशर, लिवर की बीमारी, तो उसमें और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने मसल्स, बोन्स और एनर्जी का ध्यान रखें. और ये सिर्फ एक्सरसाइज और अच्छे खान पान से आ सकता है, और कभी कभी इसके लिए एक्सपर्ट्स की हेल्प लेना भी ज़रूरी हो जाता है. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एंड यू डिज़र्व अ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी. थैंक यू. Thank you so much sir for that informative session about liver frailty. I think किसी ने सही कहा है, liver hit तो body fit. So thank you viewers, thank you sir. We will be coming up with next topic next time. Until then, bye bye and thank you.